if we talk about the scope of anthropology, so how we can tell the scope that anthropology is useful or utilized in all these fields. तो field कौन सा? Biological, social, archaeological, linguistic and other scope में क्या है कि help very much helpful, holistic view. तो scope individually, scope in society. So individual में biological आ सकता है, biological in two aspects, biological individual, biological in society और applied. तो actually जो applied part of the thing है ना, वो एक scope के रूप में उभर के बाहर आता है, right? The scope is actually the application of anthropology in various fields, utilization of the knowledge of this, उसको बोलते हैं scope. So meaning हो, नेचर का मतलब सब्जेक्ट कैसा है, राइट? होलिस्टिक है, इंटीग्रेटेड है, कंपैरेटिव है. स्कोप का मतलब इन वेरियस फील्ड्स हाउ कैन यू यूज द नॉलेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. ये हो गया स्कोप, राइट? देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ग्रोथ एंड टुडे वी शैल डिस्कस टू थिंग्स. फर्स्ट रिलेशनशिप एंड सेकंड द कंसेप्ट ऑफ कल्चर, राइट? कल्चर और सोसाइटी करना, बिकॉज द फर्स्ट पार्ट वाज द बायोलॉजिकल, सेकंड इज सोशियो कल्चरल. तो हमारा जो पहला पार्ट स्टार्ट हो रहा है दैट इज द सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, इन विच फर्स्ट वी नीड टू नो द कल्चर, then the society, then all those topics, familial anthropology, political, economic, religion, right? Then fieldwork techniques. उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी एंड देन वी शैल स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट. इसके साथ साथ ही हम पहले पेपर सेकंड को कवर करेंगे बिकॉज ऑल दीज टॉपिक्स आर रिलेवेंट देयर. फिर हम उठ के आएंगे फिजिकल पे. जो फिजिकल जो है वो अलूफ है. पेपर 1, पेपर 2, जैसे इफ वी स्टडी मैरिज हियर then what in India, society here what in India, culture what in India, right? तो इंडिया में उसका क्या पर्सपेक्टिव पेपर 2 है, तो पेपर 1 को पेपर 2 से सोशियो कल्चर मिलाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, राइट? तो टुडे लेट्स स्टार्ट फर्स्ट दी रिलेशनशिप. ओके, सो relationship of anthro, right, to other discipline, right? So as we have already discussed that anthropology is actually related to so many subjects and so many branches. One side it is related to biology plus medical, दोनों ही है, right? Biology and medical. दूसरी तरफ it is related with the humanities, socio-cultural aspect, archaeological aspect, right? So in biological aspect it is very much nearer to biology and medical, and in socio-cultural aspect, archaeological aspect, it is very much nearer to the humanities. अब कैसे है देखो, first let's discuss about the biology, right? अब देखो, we studied biology, right? A few students of you have the background of biology, or till 10th हम सबने biology पढ़ा है. We all know the biology. What is biology? Study of life, study of living beings. How we study the living beings? Morphology and anatomy, right? So in biology we deal with the morphology and anatomy, right? And developmental biology, embryology, genetics, all these things are there in biology हम पढ़ते हैं. Now what we study in biology, the subject matter, what we study in biology is the subject matter. Do we study human only?
देन एनिमल्स ऑल्सो, से वायरस पढ़ते हैं, बैक्टीरिया मीन्स माइक्रोबायोलॉजी, वी स्टडी अदर एनिमल्स इन कंपेरिजन टू ह्यूमन, राइट। एनाटॉमी में भी एनाटॉमी ऑफ रैबिट और माउस और फिश और द फ्रॉग, राइट, dissection of frog, Scoliodon, Unio, Pila, all these things we study, right? So we study all the life beings, right? So in biology, it is actually focused on life or living beings living on this planet, right? We study about the virus, bacteria, then we start with the non-chordates and chordates, राइट, नॉन कॉर्ड्स में पढ़ते हैं हम लोग, वी स्टार्ट विद अमीबा, राइट, जो पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा है ना, बोलना जरा नॉन कॉर्डेट्स का। वी हैव प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सेलेंटेटा, एस्केलेमेंथीज, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केलेमेंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकेंडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, राइट। सो आप यू स्टार्ट विद द यूनिसेलुलर अमीबा, राइट, वहां से आप एम्फीबियंस पढ़ते हैं, प्लेटिहेल्मिन्थीज मतलब टैपवॉर्म, एनिडा मतलब कैंचुए फेरेटिमा, राइट, फिर ऑर्थ्रोपोड्स सारे इंसेक्ट्स, राइट, उसके बाद मोलस्कन्स, इकेंडर्मेट्स एंड कॉर्डेट्स। सो बायोलॉजी इज नॉट कन्फाइंड टू ह्यूमन ओनली। अब देखो हम सिमिलर डिफरेंस दोनों निकाल रहे हैं। सो फर्स्ट वी नीड टू नो, वी नो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, हमने कल वी स्टडीड अबाउट द सिलेबस, नाउ वी आर स्टडीइंग द सिलेबस ऑफ बायोलॉजी। So in biology we start with the microorganisms, right? उनका कंपैरिजन, उनकी एनाटॉमी, उनकी मॉर्फोलॉजी, उनका हैबिट एंड हैबिटेट, राइट, उनका रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, राइट, सब पढ़ते हैं। तो दिस इज इन बायोलॉजी। इन बायोलॉजी वी हैव टू ब्रांचेस, दैट इज बॉटनी एंड zoology. Botany is about the flora and zoology about the fauna. तो फ्लोरा एंड फोना दोनों इसके अंदर आते हैं। और बॉटनी में भी वही बात है, वी स्टडी फ्रॉम दी algae, fungi, right, then thallophyta, bryophyta, then pteridophyta, then gymno and angio. So whole from basic to advanced form, right, morphology, anatomy, genetics, development, ये सारा पढ़ते हैं। अब एक तरफ आ जाओ, this is the biology. In biology we have botany and zoology, right? अब एक तरफ आ जाता है हमारा biological anthropology, right? Now, as we discussed in 18th, around 16th, 17th century, but it started at the time, this was called as physical anthropology. Why so? Because at that particular time, it was confined to primate, race, and fossils. Not more than that. In that way, it was very much near to biology, a subject. Biology as a subject was very much nearer to that one, क्योंकि आपको प्राइमेट्स की एनाटॉमी पढ़नी है, प्राइमेट क्लासिफिकेशन वहां भी है और यहां भी है, रेशियल कैरेक्टर वहां भी है और यहां भी है। तो जब आप एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे तो यही पढ़ रहे थे। देन स्कोप और हुआ, जेनेटिक्स मिली, ठीक है, आप साथ में आगे, बट अलोंग विद दैट एक नए स्कोप्स आए, इन्वायरमेंटल, राइट, ग्रोथ फैक्टर्स, इंपैक्ट ऑफ यानी का आउटर वर्ल्ड टू थिंग्स। अब एंथ्रोबायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप बढ़ रहा है। एंथ्रोपोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स, डिफेंस, टेक्निक्स, न्यूट्रिशन, फॉरेंसिक, सारा स्कोप बढ़ रहा है। सो एंथ्रोपोलॉजी इज नाउ मच मोर एप्लीकेशन और एप्लीकेटिव इन टर्म इन यूज, राइट। अब अगर हमें कोई कहे कि व्हाट आर द सिमिलैरिटी बिटवीन बायोलॉजी एंड बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, तो पहले बात करो सिमिलैरिटीज की, राइट। तो बताओ सिमिलैरिटीज क्या है। बताइए। बोथ डील विद दी किससे, लिविंग बीइंग, लाइफ नॉट लिविंग बीइंग, राइट, क्योंकि इसके अंदर वो भी तो पढ़ते हैं। हाँ, डील विद दी लाइफ, पहली बात हम करते हैं। दूसरा, इट आल्सो डील विद दी एनाटॉमी, जेनेटिक्स, राइट, और
और बताओ, एनाटॉमी है, जेनेटिक्स है, और इवोल्यूशन, डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन, तीनों फॉर्म में काम करता है ना बायोलॉजी, राइट? इट डील्स विद द ह्यूमन इवोल्यूशन, डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डिफरेंशिएशन. इन थ्री टर्म्स इट इज वेरी मच नियर टू बायोलॉजी, है ना? है कि नहीं? इज इट क्लियर? लुक, when we compare two subjects, first of all we need to know the subject matter of both. If I say what is the similarity between history and anthropology, the first I need to know what we study in history, then I can compare na. So in biology we know biology is all about the study of life, right? All sorts of life. अब देखो फर्क देखो, all sorts of life, whether it is unicellular or multicellular, simple or complex, right? All sorts of life, morphologically, anatomically. ये बायोलॉजी की सिंपल परिभाषा है. बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी डील्स विद द ह्यूमन. फाइन टू टॉपिक सेम है. सो आउट ऑफ ऑल द लाइफ एंथ्रोपोलॉजी हैव चोजन फॉर ह्यूमन, बायोलॉजी हैव चोजन फॉर एवरीथिंग, right? It means human is already included into biology, right? But human is not a single topic of biology. बाकी चीजें हम वही पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में, वही सब कुछ है जो क्लीन फिट, जो चाहे जेनेटिक्स हो, एब्रेशन हो, मेंडलिज्म हो, ये स्टडिंग एवरीथिंग. सेकंड थिंग, इन एंथ्रोपोलॉजी वी डू नॉट डील विद द एनाटॉमी पार्ट, राइट? वी आर नॉट विद द एनाटॉमी पार्ट. देखो सिमिलरिटी तो हो गई, अब हम बात किसकी करें सिमिलरिटी की बात. सिमिलरिटी क्या है कि द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, डिफरेंस इन ह्यूमन, दे ऑल इंक्लूडेड इनटू द बायोलॉजी, राइट? वो तो होगी सिमिलरिटी, राइट? मॉर्फोलॉजी सिमिलरिटी, राइट? सब्जेक्ट मैटर सिमिलरिटी. अब हम किसकी बात कर रहे हैं इसके आगे? राइट? डिसिमिलरिटीज, क्या समानता है? पहली बात जो हमने कही कि बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज कन्फाइंड टू ह्यूमन ओनली, राइट? कन्फाइंड टू ह्यूमन ओनली. सेकंड डिफरेंट बताओ. इट डज नॉट डील विद द एनाटॉमी. डिसेक्शन कहां करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम. कहां देखते हैं? न्यूरो सिस्टम. बायोलॉजी में तो कहां देखते हैं? वी कंपेयर बट नॉट विद द डिसेक्शन. क्या आपको इसमें सिखाया गया कहीं पे फोटो है कि जी ये में ये कहा जाता है इन कंपेरिजन टू एप्स हमारा ये सिस्टम है, बट हमें ये थोड़ी बता के रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेशन सिस्टम है, आपका मसल्स का सिस्टम है, बोन्स का. बस हम कहते हैं इरेक्ट पोस्चर. In that particular, how we adopted to the nature as a human, what changes occurred when an ape transformed into a human being, but that is not anatomy. Anatomy में तो dissection आएगा, tissues, cell, tissues, organ, system सब पढ़ोगे. क्या पढ़ते हो? नहीं पढ़ते. हम टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम नहीं पढ़ते हैं. एपिथेलियल टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, मसल्स, न्यूरॉन्स नहीं पढ़ते. इट इज नॉट सब्जेक्ट. एंथ्रो में तो नहीं आते. नहीं, आप ऑपरेशन थोड़ी करते हो, आप तो फोरेंसिक में विसरा करते हो. आपका तो ब्लड मिलता है, आप बस उसकी पैटर्नाइज करते हो क्योंकि वो पार्ट है. यू से बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी बट इट इज नॉट बायोलॉजी, बिकॉज इन बायोलॉजी दे डू नॉट स्टडी बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, राइट? वी स्टडी बायोलॉजी इन बायोलॉजी, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, बट अ पार्ट ऑफ दैट कन्फाइंड टू द ह्यूमन. हमारा काम है कंपेरेटिव एनाटॉमी में, बट इन कंपेरेटिव एनाटॉमी हम सिर्फ उसको करते हैं, बट उस पर लेख नहीं लिखते कि उनका डाइजेशन ऐसा होता है, कैसा होता है, उनके मसल्स नहीं. हमें बस ये देखना है हाउ एप आर सिमिलर एंड डिफरेंट टू द ह्यूमन, नॉट ऑल द एनिमल्स, राइट? तो हम इस पे लिंक. तीसरी हमारी जो बात है वो दैट इन एंथ्रोपोलॉजी इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट,
सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट, वो बायोलॉजी कभी करेगी नहीं, राइट। इफ यू टॉक अबाउट द कल्चरल अडेप्टेशन टू ह्यूमन, क्या ये बात बायोलॉजी करेगा? नहीं करेगा। उसको कल्चरल और सोशियो अडेप्टेशन से क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बिकॉज दिस एंथ्रोपोलॉजी हैज ऑल द थिंग्स ना। हम सिर्फ बायोलॉजी का एंथ्रोपोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग एंथ्रोपोलॉजी, राइट। सो हाउ एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल का वर्ड मत समझना, हाउ एंथ्रोपोलॉजी इज सिमिलर टू दी बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में वो सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट नहीं है, नहीं है ना। अब इम्पैक्ट ऑफ सोशियो एंड हाउ एंथ्रोपोलॉजी यूटिलाइज्ड इन सोसाइटी, नहीं है। तो सिमिलरिटी में क्या आ जाएगा? बायोलॉजिकल, और डिसिमिलरिटी में सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट नहीं है, राइट। और बायोलॉजिकल भी सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट हम यूज करते हैं, जैसे इन हाई एल्टीट्यूड एरिया हाउ ह्यूमन एडेप्ट, तो वहां पर कल्चर की बात करेंगे कि हाउ ह्यूमन कल्चरली अडॉप्टेड एट हाई एल्टीट्यूड एरिया। क्या बायोलॉजी करेगा उसको? नहीं करेगा। बायोलॉजी कहेगा, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करेगा। किन एस्पेक्ट की बात करेगा? कि भाई आपकी जो बॉडी है उसमें हेयर पड़े, आपका ये जो है ये तीखा हो गया, राइट, आपका सिस्टम अलग हो गया, लिथार्जिक हो गए, राइट, तो वो उसकी बात करेगा। एंड एक्सेप्ट मेडिकल साइंस इन जूलॉजी ह्यूमन इज नॉट अ प्रोमिनेंट सब्जेक्ट। क्या हमने ह्यूमन का डाइसेक्शन किया? क्या कंपैरेटिव, हमने ह्यूमन को पढ़ा इन कंपेयर टू फ्रॉग, इन कंपेयर टू रैबिट। सो हियर वी हैव कंपैरेटिव एनाटॉमी टू द स्मॉल एनिमल्स। डाइसेक्शन कौन करेगा? मेडिकल साइंस। सो इफ यू टॉक अबाउट द मेडिकल साइंस, दैट इज कन्फाइंड टू ह्यूमन, देयर इट इज अ सिमिलरिटी, बोथ आर कन्फाइंड टू ह्यूमन बीइंग। बट इन बायोलॉजी नहीं, जूलॉजी में ह्यूमन है कितना? जेनेटिक्स को छोड़ दो, बाकी ह्यूमन है क्या? नहीं है ना, बस यही कह रहा हूं। So when you write about similarity and dissimilarity, anthropology is a subject having different branches. बायोलॉजी की दो ही ब्रांच है, बॉटनी एंड कंपैरिजन। तुम्हारे लिए बहुत आसान है। सिमिलरिटी क्या है? लाइफ। सिमिलरिटी क्या है? उनका इवोल्यूशन, डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन। बायोलॉजी में पढ़ते हैं हम लोग, जूलॉजी में भी पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक थ्योरी, लेमार्किज्म, डार्विनिज्म, सिंथेटिक थ्योरी, सारी हमने बायो में पढ़ी है, आराम से पढ़ी है। हमने एनाटॉमी पढ़ी है, हमने एप्स भी पढ़े हैं, हमने फॉसिल एविडेंस भी पढ़े, होमो सेपियंस भी पढ़ा है, हमने पढ़ा है। सो पार्ट इज देयर, फॉसिल्स, प्राइमेट्स, सब रेस है। बट जैसे ही सोशल कल्चर एस्पेक्ट आता है, राइट, सो सिमिलरिटी, तो जो एंथ्रो का जो इवोल्यूशन, डेवलपमेंट और डाइवर्सिटी पार्ट है, दैट इज सिमिलर। Dissimilar में it is confined to human only, that is not confined, anatomy not in that way, social cultural aspect नहीं है। यहाँ पे दोनों की similarities and dissimilar, क्लियर। उसके बाद में सेकंड आता है हमारे पास में, इसी का एक पार्ट, दैट इज अगर वो सीधे बायोलॉजी ने पूछ के सिर्फ ये पूछ ले तो क्या करोगे? बताओ, सिमिलरिटीज बताओ। बोथ कन्फाइंड टू द ह्यूमन, पहली बात, ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन, ये भी और वो भी, बट कौन से एस्पेक्ट? बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। बात वही है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। मेडिकल साइंस इज रिलेटेड विद द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन, राइट, बाय वेयर एंथ्रोपोलॉजी इज बायो एज वेल एज सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन, राइट। नाउ एक छोटा सा एग्जांपल, इन मेडिकल अ डॉक्टर इज ए डॉक्टर, राइट, वो क्या प्रिस्क्राइब करेगा? मेडिसिन, सर्जरी, राइट, बट इट डज नॉट रिकॉग्नाइज ओझाज, थमन, प्रीस्ट, एथनोमेडिसिन। करेगा क्या? नहीं करेगा। बट फॉर एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजी विल रिकॉग्नाइज एथनोमेडिसिन ऑल्सो, अ प्रीस्ट एज ए डॉक्टर ऑल्सो। आ जा, तेरे पांव में चक्के लगाने पड़ेंगे मैंने, राइट। सो डिफरेंस कहां है कि एंथ्रोपोलॉजी रिकॉग्नाइज सोशल डॉक्टर्स ऑल्सो, सोशल मेडिसिन ऑल्सो, वेयर मेडिकल साइंस डज नॉट। देखो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। इफ यू नो द सिलेबस ऑफ एंथ्रो एंड अदर सब्जेक्ट, तुम्हारे लिए कंपेरिजन बहुत आसान है, और नहीं तो नहीं है, प्रॉब्लम आएगा, राइट। सो मेडिकल साइंस सिमिलरिटीज
बोथ जो ह्यूमन सिमिलरिटी हमारे पास में है वो सारी लिख लें बायोलॉजी वाले, और डिसिमिलरिटीज में वही सोशियो कल्चरल, जिसमें क्या नाम लेना, एथनो मेडिसिन, एथनो डॉक्टर्स, डज नॉट रिकॉर्ड, राइट, इट इज कन्फाइंड विद द ट्रीटमेंट ओनली, नो द डिजीज, ट्रीट एंड ट्रीट के लिए इनके पास में ऑलरेडी एक सिस्टम है, ये नए सिस्टम को मान्यता नहीं देता। तुम तो झाड़ फूंक वो सबको मान्यता देते हो, कहते नहीं उनको मिक्स करना चाहिए, झाड़ फूंक भी करवाओ और दवाई भी लो, ये कहता झाड़ फूंक। कोरोना के टीके से पहले हमारे पास दवाई आ चुकी थी, यूट्यूब के अंदर 17,000 वीडियो थे, कोरोना कैसे ठीक है राइट, सब आ गए थे, बाबा रामदेव पे दवाई ले आए थे भाई, पेटेंट हो गया था, बताइए, क्लियर। वो एथनो मेडिसिन है, मैं तुमको बोलता हूँ ओझा, समन, तांत्रिक, सबका स्वागत है। तो दे वर पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, नॉट द मेडिकल साइंस। हमें समझना चाहिए कि बाबा रामदेव इज ए पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, नॉट द मेडिकल साइंस। सो दिस इज योर रिस्क, राइट, दे आर नॉट डॉक्टर, वो ठीक है, एस्पेक्ट्स है। अब सेकंड आता है, दिस वाज टू बायोलॉजिकल, जूलॉजी, मेडिकल साइंस, बायोलॉजी। अब आता है आपका ह्यूमैनिटीज, राइट। ह्यूमैनिटीज में सबसे पहले हम लेते हैं किसको, राइट, वी नो द हिस्ट्री, राइट। हिस्ट्री का सब्जेक्ट मैटर क्या है, हिस्ट्री का सब्जेक्ट मैटर सबसे बड़ा हमारे पास में क्या है, कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन, राइट, कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन। ईबी टाइलर बोलता है, ईबी टाइलर का, अगर क्यों we shall discuss about the culture, definition of culture through ईबी टाइलर हस्कोच। ईबी टाइलर बोलता है कि कल्चर की जब हम बात करते हैं, इट इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ नॉलेज, बिलीफ, custom, right, all things which acquired by a man as a part of society. So all the knowledge, belief, custom, all those things, right? So culture cover all the aspects of human. तो यही बात यहाँ पर है कि history is a cultural aspect, right? History cover the part of culture, society, और उसके अंदर क्या पढ़ लेते हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजन, आर्ट, आर्किटेक्चर, मीन्स मेटेरियलिस्टिक प्लस नॉन मेटेरियलिस्टिक। मेटेरियलिज्म मतलब कल्चर का जो पार्ट दिखाई देता है, जैसे आर्ट, आर्किटेक्ट दिखाई देता है, तो दिस इज कॉल्ड द मेटेरियलिस्टिक पार्ट ऑफ कल्चर। और जो बिलीफ है, जो मोरल से ट्रेडिशन दिखाई नहीं देते, वो कहते हैं नॉन मेटेरियलिस्टिक पार्ट ऑफ कल्चर। सो दिस इज मेटेरियलिस्टिक, नॉन मेटेरियलिस्टिक। अब हिस्ट्री उसी की बात करता है इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, राइट, कि क्या उस टाइम में पॉलिटिकल कंडीशन रही, इकोनॉमिक रही, सोशल कंडीशन रही, राइट, उस समय कैसे बिलीफ और ट्रेडिशन, मोरल आपके एग्जिस्टेंस रहे, एंड हाउ दे गॉट चेंज, राइट। हिस्ट्री डजंट टेल एनीथिंग, पहली बात यू इंटरप्रेट, हिस्ट्री जस्ट अबाउट द स्टेटमेंट, इफ यू आर एबल यू कैन, इफ यू आर नॉट एबल देन कैन नॉट। किताबें नहीं बताती, आप समझते हो, बात मेरी ध्यान रखना, हिस्ट्री कुछ नहीं बता रही है, आप समझ रहे हो, यू कंपेयर एंड यू एनालाइज, यू कंपेयर, यू अंडरस्टैंड, राइट। सो दिस इज द थिंग। अब हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री इज अबाउट द पास्ट, राइट। व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री, हाउ वी स्टडी हिस्ट्री, वी गो फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। उठा के देखो, एंशिएंट, तो कहां से कहां गए, पास्ट टू प्रेजेंट, एंथ्रो उल्टा है, प्रेजेंट टू, यस। सो ये चीज है, सब्जेक्ट मैटर इज देयर, राइट, सब्जेक्ट मैटर इज देयर, बट हिस्ट्री इज अपसाइड डाउन एंथ्रोपोलॉजी, राइट, हिस्ट्री अपसाइड डाउन एंथ्रोपोलॉजी, कि जो हिस्ट्री में अप है यानी कि पास्ट, वो वहां पे डाउन है, तो हिस्ट्री इज एक्चुअली अपसाइड डाउन एंथ्रोपोलॉजी, राइट। अब दोनों की सिमिलैरिटी, फर्स्ट, बोथ यूज द पास्ट, बोथ बेस्ड ऑन आर्टिफैक्ट रिमेनिंग, राइट, बोथ स्टडी कल्चर,
art, architecture, right? Political, social, economic organization, everything, right? So subject matter, method, events, equally same, right? In history as well as in. Now, history is much more confined about events. Anthropology much more confined about human. अब ये दोनों में फर्क है, right? History is much more about events, whereas anthropology is much more about human, its behavior, right? Its behavior, its etiquette, its thought, approach. Archaeological anthropology is very much nearer to history, है ना? Socio-cultural aspect. Now here is a problem. Problem क्या है? In socio-cultural aspect, anthropology is more tilted towards tribals, right? Tribal society, right? Whereas in history, it is much more about the mainstream society. That includes everything. It does not study tribal separately, right? Third, history लिखते समझते जाना, ठीक है? नोट मैं अपने आप तुम्हें दूंगा, उसकी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है. Now, history मैं कहाँ देखूँ? घूम जाता दिमाग. Now, history is more about secondary sources. Historical people are not the participatory observant. They never went to the society. So how we construct history? On the basis of sources available, and these sources are not primary sources. These are the secondary sources. जैसे artifacts, remaining books available. तो उसमें से ऐसा कोई भी नहीं जो हिस्टोरियन ने, जो लिखने वाला उसने बैठ के लिखा उस टाइम में जाके, नहीं. So history is always based on secondary data. History is based on secondary data, whereas in anthropology they are on primary data, right? वो खुद primary data पे based है, right? So history secondary data, ये primary data. Clear बात दोनों में. तो पहली बात आती है subject matter. So as we discussed, it is about from past to present. It is from present to past. दूसरी बात हमने ये बात कही कि archaeology is very much nearer to history. Both believe on data collection, and without data collection you cannot write about history and culture. Clear बात है. And एक का नाम याद रखो, फ्रेंच बोआस, historical particularism. फ्रेंच बोआस कहती है कि it is not possible to describe a culture without knowing their history. So history is very much important. So the importance of history in anthropology, तो उसमें हम नाम किसका लिखेंगे? फ्रेंच बोआस. So फ्रेंच बोआस, what he did, he actually associated history with the anthropology, right? They both are similar to each other, related to each other very much. And archaeological anthropology पूरी इस पे काम कर रही है. Archaeologists, what they do? They collect historical data, share it properly. हमने कहा था कि आर्कियोलॉजिस्ट क्या करता है? एक कल्चर के बारे में जानता है, उसके कॉन्जुगल ऑर्डर के बारे में जानता है, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जानता है, वही तो हिस्ट्री कर रहा है, राइट? हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, एंथ्रोपोलॉजी हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. क्लियर? एंड व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी? हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, हिस्ट्री ऑफ कल्चर. क्लियर? So historical aspect is always a part of anthropology. तुम्हें स्टार्ट करना है. Historical aspect is always a part of anthropology in terms of data, in terms of chronological order. So why Franz Boas, right, led the importance of history in anthropology, right? ये हमारा स्टार्ट होगा हिस्ट्री का. द सब्जेक्ट मैटर अबाउट कल्चर, पीपल, देयर रिलेशंस आर द सेम इन हिस्ट्री एज वेल एज इन
anthropology. The construction of anthropology began with the historical data, right? History is also relied on anthro as far as the data concerned. So what similarity? Dissimilarity. History mainly depends on secondary data, whereas anthropology always work on primary data. History is studied from past to present, whereas anthropology from present to past. चीजें वही है, सब्जेक्ट मैटर पे बात कर रहे हैं हम लोग, राइट? Anthropology is very much confined to the simpler societies, ethnography, whereas history is all about the events, right? Based on some data, and it is very much confined to the mainstream society, right? Mainstream society. So this is about the history similarities and dissimilarity. और कोई तुम्हारे दिमाग में आ रहा है? हर चीज बुक नहीं होता, हर चीज बुक नहीं होता, कुछ आपको भी समझना होता है, राइट? अब देखो, इसके बाद आता है हिस्ट्री एंड as we have already discussed when we were discussing about the growth of anthropology, कर रहे थे ना? So in 1919 social anthropology was introduced as a part of sociology in University of Bombay, right? इसका मतलब सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इज वेरी मच नियर टू सोशियोलॉजी. अब यहाँ पे जब हम सिमिलरिटी की बात करेंगे तो हम सोशियो कल्चर को ऊपर लेकर आएंगे. किसको लेकर आएंगे? जैसे हम बायोलॉजिकल बात कर रहे थे तो किसको ऊपर लेकर आए थे? बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को. जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे थे तो आर्कियोलॉजी को. इसकी बात करेंगे तो सोशियो कल्चरल को. अब देखो, पहली बात, सोशियोलॉजी डील्स विद द सोसाइटी एज एंथ्रोपोलॉजी डील्स. हम सीधी बात लिख रहे हैं ना. व्हेन यू स्टार्ट, सोशियोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ सोसाइटी एज द एंथ्रोपोलॉजी, राइट? क्लियर बात है. नाउ उसके बाद में as per Krober, sociology and anthropology are twin sisters, right? As per Krober, sociology and anthropology are twin sisters, जुड़वा बहनें हैं. तो आप समझ सकते हो, इसका मतलब वो एक ही माता की दो बच्चे हैं, मतलब उनका सब्जेक्ट मैटर लगभग एक ही है, बट दे आर नॉट वन. देखो फर्क पड़ता है. ट्विन सिस्टर्स है, एक नहीं है, राइट? एक नहीं. हाँ, as far as the subject matter and perspective concerned, in a broad sense, sociology and anthropology deal with the same thing, the society, of course the culture. In India, socio-cultural is very much near to society. हमने बाहर भी देखा था, यूकोम एंथ्रोपोलॉजी कॉल्ड सोशल एंथ्रोपोलॉजी इन अमेरिका की. कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी बाद में आफ्टर 19th century दे बिकेम सिनोनिम टू ईच अदर, नाइदर सोशल नॉर कल्चरल, दे बिकम सोशियो कल्चरल. सो अब हम सोशल कल्चरल की बात करते ही नहीं, वी टॉक अबाउट द सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी. सो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इज मोर और लेस इन अ ब्रॉड सेंस इज वेरी मच नियर टू सोशियोलॉजी. द सब्जेक्ट मैटर, स्टडी ऑफ सोसाइटी, राइट? द सोशियोलॉजिकल थिंकर. जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि देयर आर सेवरल सोशियोलॉजिस्ट व्हिच बिकेम द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन दिस अप्रोच. इमाइल दुर्खान, राइट? ग्रेट सोशियोलॉजिस्ट. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सुपर ऑर्गेनिक कल्चर की बात करते हैं, टोटेम की बात करते हैं, तो हम किसको याद करते हैं? दरखाइन, एस.सी. दुबे, योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास. They all were the sociologists, but became a prominent part of anthropology, right? Because they both were studying the society. Clear? अब ये हमें यहां पे लिखना है कुछ नाम. क्या नाम लिखे हमने? We shall discuss about the
Durkheim, right? Durkheim. We grade this. Then we shall discuss about the S.C. Dubey sir, R. Yogendra Singh sir, Srinivas ji, M.N. Srinivas. एक एमएन और है हिस्ट्री में, कौन है? किसी एमएन को हिस्ट्री में सुना है? एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, कौन सी? लेनिनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी 1918, ताशकंद, द फर्स्ट कम्युनिस्ट पार्टी, राइट? मानवेंद्र नाथ रॉय, वहीं से हुआ था कम्युनिस्ट मूवमेंट का टॉप होना। इंडिया में पहली कौन सी है? इंडिया की पहली कम्युनिस्ट पार्टी कौन सी है? तुम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात कर रहे हो बिटिया जी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925, गाटे जी। दिमाग में ही नहीं बस। एम एन राव सर तो ताशकंद में बनाई थी लेनिनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया के अंदर, एस बी घाटे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925। चलो छोड़ो उसको। सोशियोलॉजी, दरखाइम, एस.सी. दुबे, योगेंद्र सिंह, सो दे ऑल आर इंक्लूडेड इन एंथ्रोपोलॉजी स्टडी आल्सो। हम सिमिलरिटीज की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट मैटर, बोथ डील विद द स्टडी, राइट? मेथड्स, क्वेश्चनरी, राइट? शेड्यूल, राइट? ये सब इंटरव्यू, ऑल डेटा यूटिलाइज्ड बाय एंथ्रोपोलॉजी एज वेल एज सोशियोलॉजी, राइट? तो सब्जेक्ट मैटर है, वे है, सोशियोलॉजिस्ट है, दे बोथ डील विद द स्टडी ऑफ सोसाइटी, पीपल। तो ये हमारा है सोशियोलॉजी का मैटर। एंड अकॉर्डिंग टू क्रोबर, उसका नाम तो हमने लिखा ही था सबसे पहले, राइट? एंथ्रो एंड सोशियोलॉजी आर ट्विन सिस्टर्स। तो यहां पर हमने सिमिलैरिटी बता दी है, अब बताना है डिसिमिलैरिटी, राइट? तो लेट्स टॉक अबाउट दी डिसिमिलैरिटीज। द फर्स्ट थिंग, नाउ if we talk about the sociology, and this is anthropology, in sociology society would be in the center, where the human will be at the, or individual will be at the periphery. So sociology is the study of society. So the focus center, the epicenter will be society, not an individual or a human being. Whereas एंथ्रोपोलॉजी, राइट, ये क्या करेगा? यहां पर कौन आया? ह्यूमन, पहला। सेकंड, सोशियोलॉजी डील विद, राइट, मॉडर्न सोसाइटी, whereas एंथ्रोपोलॉजी मैक्सिमम डील विद simpler society. क्लियर? उसके बाद में एज फार एज डेटा कंसर्न, सोशियोलॉजी डिपेंडेंट ऑन सेकेंडरी डेटा, क्वेश्चनरी, शेड्यूल, राइट? whereas एंथ्रोपोलॉजी with the primary data to participatory observation, direct to the tribes, right? Direct to the primary data. That thing is that, right? So subject matter, for them modern society, for them simpler society, for them human approach, for them social approach, for that primary data, for that the secondary data.
these are the dissimilarities, but लास्ट में हम लिखेंगे but finally in present sociologists are also studying the tribal societies and anthropology are now studying urban and rural cultures and society, right? So they are bridging the gap between two subjects. This is the last point what we write about the sociology and अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है दो बड़े पे क्वेश्चन आता है हिस्ट्री और सोशियो, क्योंकि एक आर्कियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है और एक सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट, तीसरा बायोलॉजी का एस्पेक्ट, राइट? अब तीनों का पार्ट हो गया। अब हमारे पास वो सब्जेक्ट है जो पॉइंट्स में आते हैं। जैसे अगला सब्जेक्ट हम कौन सा लेते हैं? पॉलिटिकल साइंस। व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस? पॉलिटिकल साइंस इज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। कभी खुद को उल्टा देते देखे हो? कुछ मत छोड़ना। गुड, इट्स गुड बिकॉज इट इज साइंस। तो फर्स्ट वी शैल से द सिस्टमैटिक स्टडी, राइट, ऑफ व्हाट? द पॉलिटी, राइट? एंड एज आई टोल्ड यू व्हेन वी मेक एनी सिस्टमैटिक स्टडी हम इसको तीन पार्ट में पढ़ते हैं ना। फर्स्ट इज इवोल्यूशन, डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिटी, राइट? इवोल्यूशन ऑफ देन पॉलिटिकल आइडियाज, थिंकर्स, फिलोसोफर्स। पहला टॉपिक उठा के देख लो पॉलिटिकल साइंस का। सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटी, तो पूरा मॉडर्न इंडिया पढ़ते हो ना। डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, तो हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं पूरा मॉडर्न इंडिया में हाउ पॉलिटी बिकेम स्टेबलाइज इन इंडिया। और लास्ट है डाइवर्सिटी, इंडिया एंड द वर्ल्ड, राइट? इंटरनेशनल रिलेशन। सो इट इज ऑल अबाउट द systematic study of polity in terms of evolution, development, diversity and structural and functional aspect. Now, so in this what we study, the most important thing in political science, we study organization. Polity which is well organized, how they organized, right? The states, the constitution, the polity, the relationship, the complexity, right? So this is the subject matter of political science, where we deal with the organized states which are organized through a political system. They have a constitution or something head type thing. They have well organized administration and bureaucracy, right? A well organized system of election or not, then power, the structure, everything. So political science deals with this thing. Whereas in anthropology, we have political organization, the same thing. But there, it is study about the state politics as well as stateless political organization also. Right? हमने जो political organization पढ़े थे, इन क्वेश्चन का आंसर देने से पहले एक बार एंथ्रो का सिलेबस के बारे में दिमाग में आना, राइट? सो इफ वी टॉक अबाउट द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, राइट? सो इट डील विद द बैंड, ट्राइब, chiefdom, kingdom and state, right? So it deals with the head society as well as headless state and stateless both. Whereas in political science, we deal with the state organization, not stateless organization. समझ में आ गया? यहां पर हम पढ़ेंगे सिर्फ किसको? स्टेट को। वो जिनका एक ब्यूरोक्रेसी है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, उसका एक हेड है, लॉ एंड ऑर्डर है, सब कुछ है। बट इसमें इसके साथ साथ हम स्टेटलेस सोसाइटी भी पढ़ेंगे एंड लॉ एंड जस्टिस इन सिंपल सोसाइटी भी पढ़ेंगे। So this is the difference between political science and anthropology. अब अगला टॉपिक ले लेते हैं, इकोनॉमिक्स, राइट?
So what is the subject matter of economics? Economics में आप क्या पढ़ते हो? The production, distribution, consumption, right? Law governing all these things, law governing production, distribution, consumption, right? How the resources are managed, right? How economics run in the modern way. आप ये सारा पढ़ते हो. This is the subject matter of economics. Now, how economics is similar to the economy? Because in anthropology, we also deal with the meaning, scope, relevance of formalist, principle governing production, distribution, exchange, right? We discuss about the globalization and indigenous economic system, right? But apart of that, in economics, the economy is based on money, currency, standard, right? They have some sort of standard which is made in monetization terms. Whereas in economic anthropology, in anthropology, economy is based on value, not on money. For tribal, not money, value is important. For economics, money is important, not. एक एग्जांपल देता हूं. Kwakiatul and Hadda, they are two tribes. What they do कि जब उन लोगों के पास में काफी प्रेशियस पूरा ईयर और 2 ईयर वो खूब सारी प्रेशियस स्टोन्स इकट्ठा करते हैं, स्नेल्स इकट्ठा करते हैं, काफी वैल्यूएबल चीजें इकट्ठा करते हैं, एंड इन अ सेरेमनी वो उन सब चीजों को या तो डोनेट कर देते हैं या जला देते हैं. Why? For the prestige, right? It is not appropriate in economic terms, but it is appropriate in value terms for those tribes. Clear? This is the thing. Second, tribe में क्या होता है कि they have their own system. अगर आप प्रे या हंट करके लाए हो तो सबसे बड़ा हिस्सा आपको नहीं मिलेगा, आपके हेडमैन या चीफटन को मिलेगा. उसमें आपका जो प्लेस है वो आपको जाएगा, बट इट इज नॉट हियर, राइट? मनी विल बी ऑफ इन्वेस्टर, बट यहां पे नहीं. सो वैल्यूज आर मोर इंपॉर्टेंट. एंड सेकंड, इन एंथ्रोपोलॉजी वी स्टडी द इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन सिंपल सोसाइटीज, राइट? Not in complex societies, not in modern societies. Economy deals with the present economic system in present economy. क्या आपने इकोनॉमिक्स के अंदर अकबर की इकोनॉमी पढ़ी है? अशोका की नहीं पढ़ते हैं ना. सो इकोनॉमिक्स डील विद द प्रेजेंट इकोनॉमिक सिस्टम, whereas anthropology deals with the simple society economy. It may be primitive economy in terms of the modern economics, right? जैसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं, देखो, रेसिप्रोसिटी, रिडिस्ट्रीब्यूशन, राइट? इन कम्युनिटीज, सब्सिस्टेंस, हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग, स्वीडनिंग, पास्टोरलिज्म, क्या ये सारे इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं? हंटिंग, फूड गैदरिंग की इकोनॉमी कैसी नहीं है. सो दिस इज द डिसिमिलैरिटीज बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी. एक बार तुमने अगर सिलेबस को ढंग से पढ़ लिया, सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी निकल के अपना बाहर आ जाए. So economics, modern day society economy, organized economy based on money, right? Principle governing a proper system. यहाँ पे anthropology के अंदर for simple society, value based, primitive economic system, right? And comparative economy, right? ये सब हम यहाँ पढ़ते हैं. So here economy is a topic of cultural value. Clear? Where economics is a complete subject. बस यही चीज हमें यहाँ पे देखनी. तो इकोनॉमी हो गया, पॉलिटिकल हो गया, और क्या हो गया हमारा? हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमी, राइट? हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस. अब बात करेंगे साइकोलॉजी, राइट? The next topic is
व्हाट इज साइकोलॉजी बच्चे? वेरी गुड, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, राइट? व्हाट इज कल्चर? कल्चर व्हाट इज कल्चर? हमने कल पढ़ा था, कल्चर इज लर्नेड बिहेवियर, said behavior, and psychology is the study of behavior, and culture is the behavior, right? Behavior is common in both ना, मैं बस यही बता रहा हूं कि कॉमन ढूंढो, पहले सिमिलरिटी देखो। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ बिहेवियर, राइट? इट डील्स विद द नॉर्मल बिहेवियर, distorted behavior, impulses, right? How behavior is measured, controlled, everything is in psychology. The topic is now in anthropology, culture and personality topic is very much related to psychology. Personality, psychological term, right? So part culture and personality, there anthropologists study about the behavior of a social group and how this behavior develop a specific personality and character. दोनों में फर्क क्या है? If I say character, if I say personality, both are expression, both are behavior, right? But दोनों में फर्क क्या है? देखो एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज एट द टाइम ऑफ IAS एग्जामिनेशन वी हैव पर्सनैलिटी टेस्ट, नॉट कैरेक्टर टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट। तो व्हाट इज कैरेक्टर एंड व्हाट इज पर्सनैलिटी, जो तुमको समझ में आता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? It means your personality reflects your character. Think so, think so, think so. Your personality reflects your character. Is it true always? A person may be a dark character but a good personality, right? Maybe your character is not good but personality can be, yes. Look, simple paribhasha deta hu. Character is what you are in dark. When nobody sees you, how you behave, that is your character. But when everybody sees you, how you behave, that is your personality. Personality is extrinsic and character intrinsic, right? So it is said that if your personality is derived by your character, it will last long. And if not, there will always be a conflict between you and you, the inner and. Personality is not a single word. It is composed or derived by three words: person, personal, and ability. Personality. So what is person? Person means the one who is self-aware. Look, there are two words: instinct and learning. We shall discuss when we shall discuss about the culture that animals also have the expression, right? Like chimpanzee, they have gestures, different gestures. रूठ जाएंगे, मान जाएंगे, खुश हो जाएंगे, like we people do, right? Ape can learn computer. They can help others to learn also. अभी AI का टेस्ट हुआ था जापान में, एक जो मंकी है, तो उन पे करेक्ट होता है, वो क्या कहते हैं, खाने से पहले अपने जाके अपने आलूओं को वॉश किया अच्छे से, उनको भी पता है इसमें जम्स होते हैं, नॉट वी पीपल ओनली, वो भी पानी में हिला के खा रहे थे। एक यूट्यूब पे 2-3 मंकियों का आता है, तुमने कभी देखा होगा, वो मंकी गाड़ी चला रहा है, वो मंकी किसी को पीछे बैठा रहा है, लाइक इट हैपन, वो आराम से कपड़े पहन रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, खाना तब खाएंगे जब उनको दिया जाएगा, राइट? सो दे कैन, बट maximum time the behavior of animals
is instinct, not learned. We tend to learn. So why we can express differently in different form. उनमें instinct ज्यादा है, right? But they cannot learn for the long term. हम learn करके, improvise करके और different express कर सकते हैं, right? Because we are aware. And aware by so because we inherited the learning thing. आज से नहीं है, generation of generation we encultured, right? So this was the thing. So ये जो learning behavior है, तो personality का पहला word है person. Person is the one who is self-aware. So you can be good or bad at one time, right? एक से छीना दूसरे को दे दिया, चोरी की और गरीबों की मदद की, इसको क्या बोलोगे? रॉबिन हुड, द रॉबिन हुड कैरेक्टर, वो क्या करता था? अमीरों को लूटता था, गरीबों को बांटता था. तो फॉर वन गुड, फॉर वन बैड, so you can be one at both time, one time. You can be both at one time. So person, the one who is self-aware. Second is personal. Personal means what you acquired and accumulated in inner through your knowledge, your learning, your life experience, जो तुमने अंदर इकट्ठा किया है, that is your personal. And what ability require? Your ability to express your personal with self-awareness is called personality. So that is the problem at the time of interview. पहली चीज वो देखते हैं awareness. How much you are aware to self, right? मत तुम्हारा अपने बारे में पहली बात नॉलेज कितना अवेयर है. तुमने कहा मैं वहां पढ़ा, कितने अवेयर थे? तुम्हारी हॉबी कितने अवेयर है? तुम्हारा सराउंडिंग कितने अवेयर है? As a part of self, as a part of a village, as a part of a city, as a part of a state, as a part of India, India as a world. तुम्हारा अवेयरनेस का लेवल क्या है? सेकंड, व्हाट यू एक्यूमुलेटेड, तुम्हारा नॉलेज का लेवल. एंड थर्ड, योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस. So this is called the personality. Your ability to express your personal with self-awareness is called the personality. And character is that accumulation inside. When you think, what you think, how you behave when nobody sees you. Means you have power. At the time of power, now you know nobody sees you because you are above to those people. तब तुम्हारा behavior, तुम्हारा character show करता है. Right? Nobody sees you आदमी कब महसूस करता है? या तो इतना पावर हो कि मुझे क्या फर्क पड़ता है. It means nobody sees you. या डार्क का मतलब ये हो गया कि when you not bother about other people, at that time your behavior will be your character. Otherwise तो तुम्हारी पर्सनैलिटी हावी रहती है हर समय. So when we talk about this culture and personality topic in anthropology, what we think? The personality, right? और personality क्या है? The behavior, right? And same behavior aspect is in psychology. So culture and personality is very much near to psychology in terms of study of behavior in different societies. Actually, psychology is also the study of behavior. This is also study of behavior, right? So culture and personality school of anthropology is very much near to the psychology. They both the study of behavior, their pattern, how people behave, how personality develop, right? In how national characters develop. So all these the same part what is in psychology is in anthropology. ये तो हुआ एक similarity. अब dissimilarity. The first thing. Psychology deals with the behavior of individual, right? Whereas anthropology deal with the social behavior, right? Behavior of a group, behavior of a society. How society, right? What we say, how society affects the behavior of a person, because you are living in a society. Sociability, right? एक word किसने दिया था? Poppendorf. So you have sociability means you are able to live in a society. So for you, society is a school. मैंने कहा था, a tribe. It takes a tribe to raise a child. Word ध्यान रखना मेरा. It takes a tribe to raise a child. एक बच्चे को पालने में एक पूरा समाज लगता है, right? क्योंकि उस समाज में जो सीखा गया वो सब किसको दिया जाएगा?
हाँ, तो बच्चे को पालने में पूरा समझ, सो वाई वी से दैट वी आर सोशल, बिकॉज सोशलाइट बनने के लिए वो सोसाइटी का साथ लगता है एक बच्चे को बड़ा करने। सारी इंस्टीट्यूशंस काम करती है एक बच्चे के लिए, बिकॉज फैमिली इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ सोसाइटी। So when family make you learn, it learn through society. तो एक बच्चा आसानी से बड़ा नहीं होता, it takes a tribe to raise a child. So individual social behavior. दूसरी बात, psychology mainly focus on clinical psychology, right? Whereas anthropology deals with the culture and personality. Clinical psychology इसका पार्ट नहीं। दिस इज अबाउट द साइकोलॉजी। तो ये सारे तुम्हारे टॉपिक से देखते हो, और कोई है क्या इसमें? ज्योग्राफी, वन मोर, जियोग्राफी, अच्छा टॉपिक जियोग्राफी, राइट? नाउ टॉक अबाउट द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, व्हाट इज इन ज्योग्राफी? बताओ। जब ज्योग्राफी पता होगी तभी तो हम एंथ्रो के साथ टच कर पाएंगे। तो व्हाट वी हैव इन ज्योग्राफी? देखो, first what we in geography is about the physical environment, second about the human, third about the economy, right? So physical geography deals with the origin, development and distribution of resources. Human geography deals with the distribution of human resources, right? And economy, the economic aspect of resources, how human and natural resources are economically productive and their distribution. So geography is all about the resources and its distribution, whether it is evolution, development or diversity. हम तो साइंस की बात कर रहे हैं ना, geography is science, है ना, earth science, geography and geology. Now look, when an excavator, an archaeologist excavate any place, right? You work with the mind of a geologist, right? बात, फॉसिल सब ज्यादा कहां मिलेंगे? सेडिमेंट्री रॉक्स। तो पहले तो उसको पता होना चाहिए कि रॉक कौन सी है, राइट? तो वो पहले सेडिमेंट्री रॉक्स, उसको पता है लेयर्ड है, सेडिमेंट्री है। तो पहले एक आर्कियोलॉजिस्ट को जियोलॉजिस्ट का ज्ञान होना चाहिए। तो अर्थ साइंस की बात करें तो फर्स्ट यू नीड दैट माइंड ऑफ जियोलॉजी, किस तरह की अपने रॉक है, किस तरह के इसमें हमें फॉसिल्स मिलेंगे, कहां पे मिलेंगे, किस किस जगह ये रिसोर्सेज अवेलेबल है, राइट? जैसे पानी के पास में जितने भी स्टोन्स होते हैं, राइट, हमारे लिए आसान है, बट हो सकता है आर्कियोलॉजी को पता हो कि इस स्टोन के अंदर कोई मैराइन एनिमल का फॉसिल हो सकता है। वो देख के बता देगा, उसके पैटर्न को देख के बता देगा कि ये किसी एनिमल के ऊपर सेडिमेंट हुआ है या सिंपल स्टोन है। इसके लिए तुम्हें रॉक टाइप, सैंड टाइप, सैंड का केवल पता होना चाहिए। दूसरा, इन दी डिटर्मिनेशन ऑफ क्रोनोलॉजी, आप रॉक की स्टडी करते हो, ऑर्गन फॉस्फेट मेथड लगाते हो कि कौन सी रॉक कितनी पुरानी है, तो इसमें किस तरह के फॉसिल हो सकते हैं। So the knowledge of earth science is very much helpful for an archaeologist, है ना, क्योंकि वो उसी के बेस पे काम करता है, उसको पता है कौन सी लैंड पे किस तरह की चीज पे क्या पाया जाएगा, पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इन ज्योग्राफी वी आल्सो स्टडी द ट्राइबल, देयर डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ पे कौन सी ट्राइब है, किस किस जगह पे ट्राइब है, क्या उनका लिविंग पैटर्न है, राइट? वो सारा हम कहाँ पढ़ते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। सो द सब्जेक्ट मैटर, द नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी दोनों है। अब दिस सिमिलरिटीज क्या है हमको भी पता है, इट डील्स विद द रिसोर्सेज, इट डील्स विद द पीपल, राइट? It talks about the physical human economy, their resources thing. It talks about the behavior, right? It talks about the simpler society. That is not about the simpler society. ये हमारा अर्थ। अब देखो और बाकी हमको क्या चाहिए।
कौन कौन सा पूछा है देखो, रिलेशंस विद अदर डिसिप्लिन, सोशल साइंसेस कर लिया हमने, कर ली ना, बिहेवियर साइंसेस कर ली, साइकोलॉजी, सोशल साइंसेस कर ली, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, राइट, हो गई। उसके बाद बायोलॉजी, उसके बाद उसके बाद उसके बाद कंप्लीट, क्लियर। सोशल साइंसेस में उसने सोशियोलॉजी को लिया, ह्यूमैनिटीज में बाकी ले लिया, कौन सा, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, हमने तीनों यहां ले ली। अर्थ साइंस में जियोलॉजी, ज्योग्राफी आ गई, मेडिकल साइंस आ गई, बायोलॉजी आ गया, साइकोलॉजी आ गया और सोशियोलॉजी आ गया। सो इट इज कंप्लीट नाउ। ये जो पहला पार्ट हमारा है ये कंप्लीट। अब देख लो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो। मीनिंग, स्कोप, डेवलपमेंट, देन रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन, मेन ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, देयर स्कोप एंड रिलेवेंस। इसने 4 दी, हमने 6 कर दी। 2 और कौन सी थी? अप्लाइड में एक नाम लिखना, डीजी ब्रिंटन, द फर्स्ट पर्सन who used the word applied anthropology, what, D.G. Brinton. ब्रिंटन नाम है, BRINTON, ब्रिंटन, क्योंकि ब्रिंटन नहीं याद आएगा, आगे पीछे मिल जाएंगे, राइट। सो ब्रिंटन यूज्ड अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी वर्ड फर्स्ट टाइम। देखो यही चीज हमें ना बाकियों से अलग करेगी। जब आप अप्लाइड के बारे में लिखोगे, another particular टाइम जब आप लिखोगे ब्रिंटन का नाम, when you will action anthropology, soul tax, right? जब आप लिख रहे हो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, मैंने नाम लिखा था पॉल ब्रोका, राइट, हम नाम लिख रहे हैं। सो लिसनिंग दीज पीपल, हमने कहा फ्रेंच बॉस, जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। जब हम बात करेंगे साइकोलॉजी, कल्चर पर्सनैलिटी की, तो उसमें नाम लिखना आप रॉल्फ लिंटन, रूथ बेनेडिक्ट, वहां लिखो रूथ बेनेडिक्ट। देखो मैं बताता हूं, देखो कहां से नाम लेना है। ये देखो, रॉल्फ लिंटन, रूथ बेनेडिक्ट, मार्गरेट मीड, पॉल कार्डिनन और कॉरा डू बोइस। ये कौन सी स्कूल है? कल्चर एंड, जिसको हमने साइको के साथ जोड़ा था। नहीं, हम लिखेंगे कल्चर पर्सनैलिटी में, लाइक एंथ्रोपोलॉजिस्ट लाइक रूथ बेनेडिक्ट, रॉल्फ लिंटन, 2 के नाम लिखना, राइट। दे स्टडीड culture and personality, right, which were very similar to the psychology, right. In terms of study culture and personality, right, they studied the psychology. तो हमें रूथ बेनेडिक्ट और मार्गरेट मीड, और हमको 2 नाम है, एक तो रॉल्फ लिंटन, एक रूथ बेनेडिक्ट, ये 2 तुम्हें बहुत अक्सर दिखाई देंगे। क्लियर? चलो, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया पूरा। अब आते हैं अपने सेकंड टॉपिक, राइट, और वो टॉपिक कौन सा है हमारा? दैट इज अबाउट द कल्चर। ये देखो, अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें पहला टॉपिक कौन सा है? कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक, सिविलाइजेशन, एथनोसेंट्रिसिज्म वर्सेस कल्चर, राइट। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। 10-15 मिनट करेंगे, पर एक बार हमें पता होना चाहिए। लुक, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, टॉकिंग अबाउट द कल्चर, so now the word is the first person who used this term was the first definition given by E.B. Tyler in his book, क्या नाम था उसका? Very good. So the first systematic definition of culture is given by E.B. Tyler in his book The Primitive Culture. And what is the definition of Tyler? That culture is the complex, क्या है ये?
complex of knowledge, belief, custom ट्रेडिशन एक साथ आ गया, बिलीफ आ गया, नॉलेज आ गया, राइट राइट. कल्चर इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ नॉलेज, बिलीफ, कस्टम, राइट, acquired by a human कैसे, एज अ मेंबर और पार्ट ऑफ सोसाइटी. अब इसको पार्ट कहो या मेंबर. राइट, इट्स क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स है, राइट. सो a complex of knowledge, belief, customs, traditions, right, acquired by a human as a. So culture is available for those people only who are socialite in nature. यही कह रहा है ना कि you can acquire if you are a member of society. Not feral children, not orang-outan. Clear? If you are a part of society, right, then you can acquire all these things. क्या? Our knowledge, belief, custom, habit of all these things. तो किसी एक सोसाइटी के मेंबर होने के नाते आप जो बिलीफ पैदा करते हो, जो कस्टम ट्रेडिशन में रहते हो, जो नॉलेज एक्वायर करते हो, उस नॉलेज, उस बिलीफ, उस कस्टम, उस मोरल, उन सबको मिला जुला के क्या कहा जाता है, कल्चर, राइट. ये था टाइलर की डेफिनेशन इन ए सिस्टमैटिक वे. अब इस बेस पे इफ वी टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द कल्चर. What are the features of culture? What are the features of culture? First, it is learned. As Kroeber and Lacan said, culture is learned, right? It is not by birth, it is learned. According to Kroeber and Lacan, culture is learned, right? Right? In a society, if you are living in a society, you will learn culture. So culture is learned, right? Not by birth, not inherited, right? पहली बात, तो culture क्या है? It is a learned behavior. Culture is a learned behavior. It is not by birth, not a inherited behavior. यही हाथ है जो किसी कल्चर के अंदर किसी को मारते हैं, कोई कल्चर के अंदर बचाते हैं. क्लियर है? हाथ वही है, शरीर वही है, बट बिहेवियर, व्हाट विल बी योर बिहेवियर, इट इज डिटरमिनेटेड बाय योर कल्चर. सो कल्चर इज ए लर्नेड बिहेवियर. ये बात कौन कर रहा है? क्रोबर एंड लैकन, राइट? सेकंड, कल्चर इज मैन मेड, राइट? कल्चर इज मैन मेड मीन्स इट्स यूनिक. तो कल्चर का दूसरा पार्ट क्या आ गया? कल्चर इज यूनिक. क्लियर? हर्कोविच बोलता है, हर्कोविच क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू हर्कोविच, कल्चर इज द मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, राइट? आप पढ़ो, कौन सा पार्ट है?
मतलब कल्चर इज मेड बाय अ ह्यूमन बीइंग, मतलब इन्वायरमेंट में मैंने कहा था ना, हम भी डिस्कस दैट कल्चर इज द एक्लिमेटाइजेशन टू द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, राइट? सो व्हाट यू कंस्ट्रक्ट टू लिव इन दैट एनवायरमेंट, दैट इज योर कल्चर. सो कल्चर इज मैन मेड पार्ट ऑफ environment. Environment is natural, we say made by supernatural power. ये कहता है culture is not that. Culture is made by, so why it is unique? It is not for other animals. Only human can make the culture, right? So it is unique. Clear? Is it clear? उसके बाद it is symbolic. Like MacIver. According to MacIver, culture is symbolic. So he gave example of language. What is language? Language is the representation of culture. Every culture has a unique language, and that language actually symbolizes the culture. So culture is symbolized by many ways. At the time of, like, what happens at the peak of civilization, the content or component of civilization becomes the symbol of culture. जैसे coins से civilized है, culture नहीं है, materialistic part है. So but at the later time we define a culture through its coins, right? कि बस उस culture का ये symbol है कि ये जो coin है, it belongs to that culture. Clear? So the same thing, culture is quite symbolic. कोई एनिमल से, कोई ट्री से, कोई लैंग्वेज से, कोई थॉट से कल्चर को डिनोट करता है. जैसे रेड इंडियंस कल्चर को हम क्या करते हैं, एक पर्सन जिसने यहाँ पे पंख से पहन रखे हैं और यहाँ ऐसे, मतलब एक ऐसा टेढ़ा सा फोटो आपको ऐसे लगेगा जिसने यहाँ पे ऐसे पंख लगा. दिस इज सिंबल ऑफ द रेड इंडियंस कल्चर, राइट? So culture is symbolic. ये बात कौन कहता है? MacIver, on the basis of language. Language is the symbol of culture. So culture is symbolic. Clear? Now, इसके बाद आता है फ्रेंच बोआस. फ्रेंच बोआस क्या कहता है? फ्रेंच बोआस का नाम हमने कहाँ पढ़ा? Every culture is unique in nature. So why to know a culture you need to know the whole traits of culture, right? So accordingly culture जो है it is shared, right? Culture is relativism. It believe in each and every culture is unique its own place. You cannot compare two different cultures, right? You cannot compare two different. So culture is believe in culture, not ethnocentrism, right? Yes. जिसने स्टार्ट किया था, राइट? हम पढ़ेंगे जब रिलेटिविज्म पढ़ेंगे, एथनोसेंट्रिसिज्म पढ़ेंगे, तो फ्रेंच बोआस बोलता है कि कल्चर, ईच एंड एवरी कल्चर इज यूनिक इट्स ओन प्लेस, राइट? यू कैन नॉट कंपेयर टू डिफरेंट, दे आर नाइदर इंफीरियर नॉर, यस. सो दिस इंफीरियर एंड सुपीरियर इज नेवर हैपन्स इन द कल्चर. देन कल्चर इज शेयर्ड. अगला हमारा क्या? कल्चर इज शेयर.
According to Ruth Benedict, culture is a form of social order. According to Ruth Benedict, नाम पढ़ा है ना, कहाँ पढ़ा? कल्चर एंड पर्सनालिटी. तो जब कोई कल्चर और पर्सनालिटी की बात करेगा वो बात करेगा ऑर्डर की. बिहेवियर इज ए पैटर्न, राइट? सो ये हमेशा, ये रूथ बेनेडिक्ट, रॉब लिंटन हमेशा पैटर्न की बात करेगा. ऑर्गेनाइज पैटर्न, ये हमेशा पैटर्न की बात करेगा कि हर कल्चर का एक पैटर्न होता है, हर कल्चर का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, हर कल्चर का एक सोशल ऑर्डर होता है. So this is, they talks about that culture is actually a social order, right? In a systematic manner, in an organized manner. तो उनके लिए कल्चर क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर है, एक सोशल ऑर्डर है, in which all traits are oriented in a proper manner. So culture is a social order where all the patterns are managed in a proper manner. All patterns are managed in a proper manner. इसको बोलते हैं कल्चर कॉन्फ़िगरेशन. हम आगे डिस्कस करेंगे इस पर. तो ये रूथ बेनेडिक्ट बोलता है. इसके अलावा कल्चर में और क्या है? नाइदर इंफीरियर नॉर सुपीरियर, शेयर्ड, यूनिक, राइट, लर्नेड और यूनिक इट्स ओन, सिंबॉलिक, और कोई बताओ मेरे को, कुछ तुम्हारे दिमाग में आता है? Present in all time and space, very good. And कुछ और आता है याद? नहीं, वो तो एक थॉट हो गया. कल्चर जैसे हमने अभी क्या क्या पढ़ लिया. फर्स्ट बार क्या पढ़ा हमने? टाइलर क्या बोल रहा है कल्चर के बारे में? टाइलर क्या बोलता है? टाइलर का व्यू क्या है कल्चर के बारे में? एक्वायर्ड बाय ए मैन एज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी, राइट? तो पहली बात ये होती है, जैसे हमने कहा कि इट इज लर्नेड, दूसरी शेयर्ड, तीसरी यूनिक, चौथी सिंबॉलिक, राइट? और क्या है? कल्चर एज ए ऑर्डर, एज एन ऑर्डर, और रिलेटिविज्म, राइट? मीन्स neither inferior nor so we discussed all the 6 points of culture. It is symbolic, it is shared, it is unique, इसमें कल्चर नहीं, किसी ने नहीं बोला इसको. इट इज शेयर्ड, फिर हमने कहा इट इज मैन मेड, हमने लिख लिया था. इट इज अ सोशल ऑर्डर, राइट? फिर हमने एक वर्ड दिया था किसका? रिलेटिविज्म का. नाइदर इन्फीरियर नॉर सुपीरियर, राइट? और कौन सा लाए थे हम? क्रोबर कहा गया लर्नेड का. लर्नेड आई नहीं, क्रोबर ने कहा था. So these are the features of the culture जो हमने अलग अलग डेफिनेशंस में यूज की. So this is about the culture feature. ठीक है? अब इस बेस पे क्या होता है? On this basis we find 3 different pattern of culture. Maybe post में यानी I don't know. This is the ideal culture, real culture, and culture culture. And this phenomena is given by Rolf Linton. Rolf Linton said there are 3 types of culture. Culture is not of 3 types. Culture is culture.
but it can be presented into three types. Ideal culture, या किसी बड़े बूढ़े से मिलो, क्या कहता है? कल्चर का मतलब होता है वैल्यू, मोरल, थॉट, सब मिलजुल कर रहे, एक साथ रहे, कोऑर्डिनेट रहे, बड़ों का सम्मान हो. So an ideal form of culture where ethics, values and philosophical view are prominent. This is called the ideal form of culture. किसी भी एल्डर से मिल, उनके पास कौन सी फॉर्म है? सेकंड क्या है? What it is in practical. Clear? So our culture is an ideal culture. We have ethics, moral and values. But what is going on, that is your real culture. Where are ethics, values, morals, how they are placed, where they are placed, right? What is in priority, right? Yeah. दूसरी बात सीधा है इनका, what is in, और तीसरा क्या आता है? How an anthropologist constructs that culture. In this, it will be a mixture of ideal and real. First, it will describe that this culture is this, with these ideas, morals, values, this and this. And this is the practical. So in construction of culture, it will be a mixture of ideal and real. Clear? ये बात कहां से उठ के आई थी? द ऑर्गेनाइट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक. कौन है? द ऑर्गेनाइट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक. किसने लिखा है? द फंक्शनलिस्ट ऑफ द वर्ल्ड who gave participatory observation to the world. Malinowski. आप रेडक्लिफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है. So Malinowski, when he was working on Tobian Island, Melanesia. So when he talked to elder about the culture, उन्होंने क्या कहा? They describe culture in philosophical way. And when he talked to youngsters, right? That was the real culture, the practically, and finally, when he wrote the book, The Organoids of Western Pacific, he made a culture construct form. That was the mixture of ideal and. So this is called the ideal, real and this. So this is the culture. आज हम इतना ही करेंगे, बाकी to the Monday. Next Saturday we shall start with the test now. अब हर Saturday हम test. Anthropology. Okay, thank you.